Hi guys, this is Vidhi Jain and welcome back to my channel. And in today's video, we will be studying the very first chapter of class 12th business studies for CBSE, which is nature and significance of business. Now, we know that the chapters generally for business studies are quite long, so the entire chapter I'll be dividing it into certain parts and video आपको इसीलिए parts में मिलेगी. So in today's video, we will be studying first of all what is the meaning of management, then what is the meaning of effectiveness, then what is the meaning of efficiency, and then finally why is effectiveness as well as efficiency both needed in an organization. So let's begin. First of all, going with the very basic thing कि हम पूरी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज में मैनेजमेंट को पढ़ते हैं. इन दी पार्ट 1 ऑफ आवर बिजनेस स्टडीज हम मैनेजमेंट को थियोरेटिकली पढ़ते हैं वेयर वी स्टडी ऑल इट्स फंक्शंस एंड एवरीथिंग, एंड इन दी सेकंड पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज वी स्टडी इट इन दी फाइनेंशियल सेंस, तो उसमें हम फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं. Therefore, it's important कि हम ये समझे कि मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, which we will be studying for the next 1 year. So, management को अगर हम simple terms में कहें, because this is not a very term which is related to rocket science. ये एक ऐसी term है जो हम सुनते हैं. तो मैनेजमेंट का सिंपली मतलब होता है टू डू थिंग्स सिस्टमैटिकली टू अवॉइड एनी chaos. दिस इज व्हाट मैनेजमेंट इज. जब आप चीजों को एक एक करके सिस्टमैटिकली करते हो, एक हैप हजार्ड मैनर में नहीं करते हो, सो दैट यू कैन अचीव योर टारगेट्स एंड ऑल्सो देयर इज नो chaos. ओके, ऐसा नहीं है कि काम पूरा नहीं हो रहा है. अगर मान लो काम हो गया है तो दो दो बार हो गया है. To avoid all such mishaps and haphazards, whenever we systematically do our work, this is what management is. But हमारी book हमें क्या definition देती है? The book gives us the definition that management is defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Now, the key words or the key terms which we need to keep in our mind, which might be asked in the case study, is first of all process, secondly effectively, and third efficiently. ये तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके अराउंड हमारी बहुत सारी केस स्टडीज हो सकती हैं. तो पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद फिर हम इन कीवर्ड्स पे जंप करेंगे. तो वो क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस का मतलब होता है जब हम एक काम को एक सीरीज में करते हैं. तो ये मैनेजमेंट एक सीरीज है जिसमें हम दूसरों से काम करवा रहे हैं सो दैट वी अचीव द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. दोनों ये टर्म्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वील बी सीइंग इन अ मिनट. बट अनदर पॉइंट वेयर ऑल ऑफ अस नीड टू draw our attention is getting things done. Okay, मैनेजमेंट का मतलब होता है काम करवाना, ना कि खुद काम करना. एंड ये आप इस तरह भी ले सकते हैं, लाइक इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ देयर इज अ मैनेजर, मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है, सो प्रोडक्शन मैनेजर खुद प्रोडक्शन नहीं करता है, रादर ही कंट्रोल्स द पीपल अंडर हिम एंड ट्राइज टू गेट द वर्क डन फ्रॉम दैट पीपल. यही मतलब होता है एक मैनेजर का. और मैनेजमेंट का भी यही मतलब है कि आप अपने से नीचे जो लोग हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स से काम करवा रहे हो. So this is something you need to keep in your mind for the entire management and for the entire curriculum. So now let's begin with the keywords that we have. First important key term or keyword is process. हमने management को एक process क्यों कहा? We called management as a process because management means doing work through successive steps. Successive steps यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक steps करना. और मैनेजमेंट हम ये कह रहे हैं कि आप मैनेजमेंट करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. क्या स्टेप्स हैं ये? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और क्योंकि ये सक्सेसिव स्टेप्स हैं, इसका मतलब आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, then you will have to organize, then you will have to staff, then you'll have to direct, and finally you will have to control in order to get your management done for one particular aim to be achieved.
अब एक और इंटरेस्टिंग चीज कि ये पांचों स्टेप्स जो अभी मैंने कहे, दीज आर ऑल्सो दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. So, आपकी पूरी part 1 of the book is based on all of these five steps. So basically, planning, organizing, staffing, directing, and controlling. These are the steps. इन्हें steps कह लो या function कह लो. It's one and the same thing. But management एक process इसीलिए है क्योंकि हम one after the other in steps या in functions को perform करते हैं. Now let's get on to the next second term of ours, which is effectively. Effectively का general meaning होता है to complete the task or do the thing. Now let's go by the definition that has been given to us. Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing the activities and achieving the goals. So effectively या effectiveness कुछ भी कह लो, it simply means that you are completing your given work. हम सबको जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, वी गेट अ सर्टेन वर्क विच इज असाइन टू अस. कोई भी टास्क हो सकता है, कुछ भी. उस टास्क को कंप्लीट करना, उस वर्क को कंप्लीट करना इज व्हाट इफेक्टिवनेस इज ऑल अबाउट. आप काम को पूरा कर रहे हो टू अचीव योर गोल्स एंड दैट इज व्हाट इफेक्टिवनेस इज. In other words, it is concerned with the end result. So अब effectiveness आप कैसे याद रखोगे? You need to keep in mind the key terms which are completing the activities, finishing the task, or concerned with the end result. क्योंकि effectiveness में the only thing which matters to us is कि काम पूरा हो जाना चाहिए and we just have to finish the work. तो यहाँ पे focus कह लो या keyword कह लो, key term कह लो, कुछ भी कह लो, it is completing the work. Now, keep in mind one thing that you might get a case study which might try to entangle you between the difference of effectiveness and efficiency. इसी वजह से you need to understand this very clearly. तो effectively का मतलब है simply आपको काम पूरा करना है. एंड रिजल्ट पे हम ज्यादा फोकस्ड हैं. दैट इज व्हाई इवन इफ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज आर वेस्टेड ऑन कंप्लीटिंग द टास्क, इट डजंट मैटर टू अस क्योंकि सिर्फ एंड रिजल्ट ऑफ फिनिशिंग द टास्क मैटर्स हियर. सो ऑल द टर्म्स लाइक कंप्लीटिंग द वर्क, एंड रिजल्ट, फिनिशिंग द वर्क, completing the task assigned, ये सभी जब हम पढ़ेंगे दैट मीन्स कि वी आर डीलिंग विद इफेक्टिवली, जहां पे हमारा फोकस इज जस्ट टू कंप्लीट द वर्क. अब थोड़ा सा आपको रियलिटी चेक अगर मैं दूं, तो हमने जैसे पढ़ा कि इफेक्टिवली सिंपली काम को पूरा करना. तो क्या आपको नहीं लगता दैट अ कंपनी कैन नॉट रिलाई ऑन जस्ट बीइंग इफेक्टिव? ओके, लेट्स से अगर अब you people are students and you have a certain date when your examinations would begin. अब आपका अगर आप इफेक्टिव होना, सो आपका फोकस सिर्फ यही होगा कि मेरे चैप्टर्स पूरे हो जाएं, मेरा सिलेबस पूरा हो जाए एंड दैट्स इट. आप ये नहीं देखोगे कि आप कितने अच्छे से उसको कर पा रहे हो, किस स्पीड पे कर पा रहे हो, कितना टाइम डिवोट कर पा रहे हो. यू वुड जस्ट बी फोकस्ड कि मुझे बस करिकुलम कंप्लीट करना है, चाहे कितने ही रिसोर्सेस मुझे उसमें क्यों ना लगाने पड़े, चाहे मैं बाकी सब्जेक्ट्स को पढूं या ना पढूं, डजंट मैटर, मुझे बिजनेस स्टडीज का कोर्स पूरा करना है. विल दैट वर्क? दैट वुडंट वर्क डेफिनेटली. और कंपनीज में भी यही होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही होता है. अगर आप सोचो कि मैं पैसा यूज करता जाऊं जस्ट फॉर द सेक कि मेरा काम पूरा हो जाए ना, इट वुडंट बी पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू डू दैट. एक टास्क इम्पोर्टेंट होता है बट अगेन कॉस्ट, प्रॉफिट, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती हैं. सो जस्ट बीइंग इफेक्टिव इज नॉट व्हाट अ कंपनी कैन डू विथ. तो दिस वाज इफेक्टिवनेस, जहां पे हम सिर्फ काम को पूरा करने की बात करते हैं. वी जस्ट टॉक अबाउट द एंड रिजल्ट, completing the work and finishing the work, that's it. Moving on to our third keyword is efficiency. एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क विद द मिनिमम कॉस्ट. तो यहाँ पे नाउ वी आर ट्राइंग टू से कि हम एफिशिएंट तब कहलाएंगे जब हम अपने काम को मिनिमम कॉस्ट के साथ कर रहे हैं. Let's get on to the definition now. So, efficiency in management is the use of resources in a manner which reduces the cost and ultimately leads to higher profits. Now, again, these words marked in red, in clouds and underlined, ये basically और कुछ नहीं है, ये keywords हैं जो आपको ध्यान रखने हैं.
दैट whenever it is about efficiency, इसका मतलब है कि हम कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं. We are talking about getting higher profits. एफिशिएंसी का मतलब होता है काम को इस तरीके से करना कि आप उसे कम से कम कॉस्ट में कर सको और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बना सको. सो द फोकस हियर वुड बी ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट. इफेक्टिवनेस में कहा था फोकस कंप्लीटिंग द वर्क, बट इन एफिशिएंसी द फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट. बट the most important point of to be kept in mind here is completing the task is not a concern here. Okay, हम ये कह रहे हैं कि चाहे काम पूरा हो या ना हो, doesn't matter. The only thing which matters to us is कि हमारी cost reduce हो जानी चाहिए. जबकि effectiveness में we were saying कि काम पूरा हो जाना चाहिए, cost कितनी ही क्यों ना लगे. So it's a complete opposite here which we study in efficiency. We can call efficiency a mirror image of effectiveness, जहाँ पे effectiveness में हम सिर्फ काम पूरा कर रहे थे, cost कितनी भी आए. Here in efficiency we are saying that completing the task is not a concern. चाहे काम पूरा हो या ना हो, हमारी cost कम हो जानी चाहिए. इसी वजह से the basic difference that comes out between efficiency and effectiveness is that effectiveness is just concerned with completing the task. ये तो हमने देख लिया. But efficiency is concerned with reducing the cost. Task may or may not get completed. These 2 points are really important to be kept in mind for the entire management. कि effectiveness का मतलब है आपने काम पूरा किया और efficiency का मतलब है कि काम पूरा हो या ना हो, आपने cost को reduce किया. Again, to give a reality check, सिर्फ एफिशिएंट होना भी एक कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है. बिकॉज अगर आप काम को आधा अधूरा छोड़ दोगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिड्यूसिंग कॉस्ट, दैट वुड बी हाईली अनप्रोफेशनल. आपके क्लाइंट्स, आपके स्टेक होल्डर्स आपसे खुश नहीं होंगे. सो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. Let's now get on to understanding why efficiency and effectiveness both are needed in an organization. हमें दोनों की नीड क्यों है, वैसे तो अभी तक आप समझ गए होंगे, बट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल जिससे कि चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाए. सो हमारे एग्जाम्पल में वी हैव मिस्टर ए who is an employee and who focuses on completing the task properly. He feels that no matter how costly it is to complete a task, he still will complete it if asked to. और इस लाइन से कहीं ना कहीं हमें पता चल रहा है that they are trying to divert our attention towards Mr. A being an effective employee, क्योंकि वो सिर्फ काम को पूरा कर रहे हैं चाहे कितना ही पैसा उसमें क्यों ना लगे. Therefore, many times he ends up wasting a lot of money and other resources of the company on completing one single task. So this confirms us कि Mr. A तो एक effective employee है. अब आते हैं हमारे second person who is Mr. B. They are saying that Mr. B is an employee who thinks that saving the resources and minimizing the cost is very essential. तो मिस्टर बी का ये सोचना है दैट कॉस्ट बच जानी चाहिए, इवन इफ वन और टू टास्क रिमेन अनअटेम्प्टेड, इट डजंट मैटर एट ऑल. अब यहीं से हमें क्लियर हो गया है दैट मिस्टर बी तो एफिशिएंट है, बिकॉज वो ये सोचते हैं टास्क पूरा हो या ना हो, हमारे रिसोर्सेज सेव हो जाने चाहिए. देयरफॉर ही डजंट कंप्लीट द टास्क मेनी टाइम्स so as to save the resources. Mr. B is an efficient employee. So here we have two employees, Mr. A who is effective and Mr. B who is an efficient employee. Now, the company is unhappy with both these employees. Just imagine अगर आपके organization में ऐसे दो employees होंगे, you would be unhappy with both of them because Mr. A सिर्फ काम को पूरा कर रहे हैं बहुत ज्यादा पैसा लगा के, which is not feasible for the company. कंपनी कहाँ से अपने profits निकालेगी, कैसे इतनी ज्यादा cost incur कर पाएगी. On the other hand, when we have Mr. B, so Mr. B is basically leading to a very high level of unprofessionalism क्योंकि वो काम पूरा नहीं कर रहे हैं. He is just saving the resources, but that doesn't lead to a good image. So company is unhappy with both of them. And that is why we say that effectiveness and efficiency both are needed. एक ऐसा employee company को चाहिए जो ना सिर्फ काम पूरा करे बट उसको मिनिमम कॉस्ट पे भी पूरा करे. सो कंपनी फोकसेस ऑन अचीविंग द गोल्स with both the concepts of efficiency and effectiveness.
तो कंपनी ये भी इंश्योर करना चाहती है कि काम पूरा भी हो जाए, द वर्क इज फिनिश्ड, बट इन द मिनिमम कॉस्ट एंड वेस्टेज। सो अभी तक हम सिर्फ कॉस्ट कॉस्ट कह रहे थे, आपको वेस्टेज का भी ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आप वेस्ट कर रहे हो अपने रिसोर्सेज, डेफिनेटली आप अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज कर रहे हो, उन्हें खराब कर रहे हो, विच इज नॉट फीजिबल फॉर अ कंपनी। एक केस स्टडी देख लेते हैं विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी, which says Ashita and Lakshita are employees working in dazzling enterprises dealing in costume jewelry. The firm secured an urgent order of 1,000 bracelets that were to be delivered within 4 days. They were assigned the responsibility of producing 500 bracelets, each at a cost of rupees 100 per bracelet. Ashita was able to produce the required number within the stipulated time at the cost of 55,000, whereas Lakshita was able to produce only 450 units at a cost of rupees 90 per unit. So you have to state whether Ashita and Lakshita were efficient and effective. Also, you have to give reasons to justify your answer. Now, along with giving you the answer and explaining you the answer, I will also tell you the way in which you can write your answer to make it more presentable. तो अगर ऐसी कोई भी केस स्टडी आती है, द वे इन विच यू राइट योर आंसर आई टेल यू, बट बिफोर दैट लेट्स ट्राई टू डी कोड व्हाट द केस सेज। हमारे पास दो एम्प्लॉयज हैं और कंपनी के पास एक ऑर्डर आया है 1,000 ब्रेसलेट्स का। तो कंपनी ने दोनों को, आशिता लक्षिता दोनों को इक्वली 500 ब्रेसलेट्स दे दिए हैं। दोनों को टाइम मिला है 4 डेज का। इन 4 डेज में बोथ ऑफ देम हैव टू प्रोड्यूस 500 ब्रेसलेट्स, और कंपनी ने कॉस्ट भी बता दी कि 100 पर ब्रेसलेट से ऊपर कॉस्ट नहीं जानी चाहिए। आश्रिता ने 55,000 रुपीज टोटल किए हैं खर्च, वेर एज लक्षिता हैज स्पेंट 90 रुपीज पर यूनिट, पर वो प्रोड्यूस 450 कर पाई है। सो कहीं ना कहीं आप अभी समझ गए होंगे कि कौन इफेक्टिव है कौन एफिशिएंट। लेट्स लुक एट द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने टारगेट को मेंशन करें अपने आंसर को शुरू करने में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टारगेट दैट वाज गिवन टू आशिता एंड लक्षिता। तो टारगेट था 500 ब्रेसलेट्स का एंड द कॉस्ट वाज रुपीज 100 ईच ब्रेसलेट, यानी टोटल कॉस्ट जितना आशिता और लक्षिता दोनों इनकर कर सकते थे वो था 50,000 ईच, बिकॉज इट्स सिंपल 500 into 100, 50,000 का दोनों खर्चा कर सकते थे। अब शुरू करते हैं हम सबसे पहले एम्प्लॉय नंबर 1, विच विल बी आवर फर्स्ट पॉइंट। सो आशिता जो हमारी एम्प्लॉय नंबर 1 है, इन्होंने टास्क कंप्लीट किया बट एट अ हायर कॉस्ट ऑफ रुपीज 55,000। She had to do it for 50,000, she did it for 55,000। उसने सिर्फ काम पूरा करने पे फोकस किया, कॉस्ट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, which means that she was an effective employee। So here we get to know that Ashita is an effective employee। अब क्योंकि यहाँ पे आप एक टर्म मेंशन कर रहे हो, you also need to define effectiveness, because I've already defined it in the previous slides, I'm not putting it here again। But अपने आंसर में once you write that Ashita is effective, do define the term effectiveness। The second point where we'll deal with the second employee Lakshita, here you can write that Lakshita could reduce the cost by producing at rupees 90 per bracelet। हमने देखा ना that Lakshita ने 90 per unit पे bracelets produce किए। So that's a great thing, she could do it at a reduced cost, क्योंकि टारगेट 100 का था, उसने 100 से काफी कम 90 पर ब्रेसलेट पे प्रोड्यूस किया, बट शी कुड प्रोड्यूस ओनली 450 ब्रेसलेट्स। टारगेट था 500 का, आप प्रोड्यूस सिर्फ 450 कर पा रहे हो। दैट मीन्स ऑल योर फोकस इज जस्ट ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, आपने टास्क तो पूरा किया ही नहीं, which means that Lakshita is an efficient employee। Now again, because you're mentioning a term over here, you need to define efficiency, which you can check out from the previous slides। So after writing these 2 points, do give a third point that both the employees are not desirable by the management, as it wants employees who can not just complete the task, but also at a reduced cost and minimal wastage। So we've understood that Lakshita एक effective employee है, sorry, Lakshita is an efficient employee and Ashita is an effective employee। So we get the thing that both of them are not desirable by the company, because company wants those who complete the task at a reduced cost, काम भी पूरा हो जाए, कम cost पे होए और कम wastage पे होए।
So this was it for today's video. आगे आने वाले videos में we'll cover the entire chapter. So thanks for reaching till here. Do subscribe to the channel if you haven't till now, and I'll see you next time. Bye.